Dear learners, welcome to Gyan Darshan channel. I'm Dr. Hemlata Chand, Assistant Professor, Discipline of Child Development, School of Continuing Education, IGNOU. And today we have with us Dr. Priyanka Suryavanshi, who is working as Associate Professor in the Discipline of Child Development, IGNOU. So the topic which we are going to discuss today is understanding disability, and you must be familiar that it is the first unit of our first course and of the Certificate in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion Program, and the name of the course is Introduction to Disabilities. So as you all know that there are basically 3 theory courses in this program, and the first theory course is Understanding Disability. So we are starting with the basic unit, which is about what disability is all about, and what are different perspectives towards the disability till date, and what are different models of the disability, and we'll be having discussion on all these points today in this particular session. So when we talk about the perspective towards the disability, as you all know that disability is a universal phenomena, and it is a universal human condition, we could say, and it is found across different civilization, different societies, and different nations. And when we talk about it's when it can to whom it can impact and how it can occur, so we can say that disability can happen to anyone at any point of time. It can be there since the birth, or it can be due to any genetic reason which can emerge in the later life, or it can be caused by any accident. When we talk about the prevalence of the disability across globe, or in India, I would say, then across globe, when we say talk about the prevalence of the disability, so as per WHO's estimate, there are around 1.3 billion people who are suffering from disability as of now. That amounts for approximately 16% of the total global population. And when I'm talking about the prevalence of disability in India, so as per census 2011 figures, around 2.2% of the total Indian population is impacted by some form of disability. And as per the NSSO survey, that is National Sample Survey Organization, which was held in the year 2018, as per this data, around 2.2% of the total Indian population is suffering from one or another form of disability. Now coming to the historical perspective towards the disability, as I have already told that disability has been a part of human race since the beginning, and at different times society has had a different approach towards the person with disabilities. So if we broadly categorize this overall how the perspective has changed till the time till now, till the since we have the records available, so we can broadly categorize this time period into the 4 categories, that is till 17th century, then 17th century, and 19th to 20th century, and 20th century onwards. So talking about the how people perceive disability till the 17th century, till that time we can say that the perception of the people towards the person with disability was of that these people are not contributing to the society, and they are dependent upon the other people, and they were even seen as a burden, and the overall attitude towards the person with society was that they should be isolated from the society, they should be kept away from the society, and since they are not contributing to the society, so they are like burden to the society, and they were kept away from the homes in the institutions or asylums. In 17th century onwards, when the parents of the children with disabilities started raising concerns that this type of attitude towards the person with disability, or locking them away from the society, it is not helping their children, and they demanded that there should be some productive approaches so that the children can be helped, or these children can be reintegrated into the society. So this resistance of the parents, or this concern of the parents, led to the change in the attitude of the society towards the person with disability by the end of 17th century, and the approach which was earlier was of isolation, later on it converted into well-being.
So in the 19th and 20th century, this change in the attitude of the society led led to the change in the approach towards the disability as well. And it was by that time it was believed that the person with disability can also be trained, and at least in the skills like daily living skills. And they were though they were seen as dependent upon the others, but they were considered as that they should be trained, and at least opportunities should be provided to them for the training. So at that time the concept of special schools came into existence, and the goal of these kind of centers was to integrate the people in the society with the people who do not have the disability. And it also, at that time only, the emphasis was being laid upon the vocational training as well, and the purpose was that they should be occupied into the meaningful job or meaningful occupations, so that they can generate some income and it can improve their well-being as well. So apart from that, the next approach, though by that time the approach shifted from isolation to well-being, but the main overall orientation was of that they need welfare of the society to survive or to establish themselves. So in 20th century, the charity based model came into the existence, and the person with disabilities were being perceived as that they can be actively integrated into the society, but it was considered as the responsibility of the people who do not have any disability to help the people who have disability, so that their condition can be made such to be integrated into the society. Then in mid 20th century, the concept of the integrated education and community based rehabilitation came into the existence, and at that time the mainstreaming term was being used. So I'll explain what these all three terms means. When I'm talking about the integrated education, it says that the person with disability should be provided educational opportunities, so that they can also be bring at the level of the children who do not, or the person who do not have any disabilities. As far as the community based rehabilitation concept is there, it says that the community's resources should be used so that person with disabilities can be benefited by them. And the term mainstreaming, which I said that it came into existence at that time, it was basically used in context to that the person with disabilities should adapt to or learn, and they should be get trained, so that they, in order to get fit to make themselves fit for integrated into the mainstream society. Mainstream society is basically made up of the people who do not have the disability, and the core concept was that the person with disability should be trained in such a manner so that the person can be at par with the people who make the overall broader society. So this happened in the early first phase of the 20th century. Then in 1948, the United Nations, everybody has equal rights, and the fundamental rights of each human being is that they should be treated equally. There should not be any form of discrimination. At the same time, India got independent, and in the Indian Constitution in the year 1950s, it also said that the person with disabilities, there should not be any discrimination of the of any kind among all the citizens of India, and everybody should be treated equally. However, in spite of having these sort of declarations and these sort of every country or every constitution making sure that the person should not be discriminated, but at the ground level, the parents, even the person with disability themselves, their parents, and the activists who were dealing with the field, they felt that it is not being executed at the ground level, and there's a need that the person with disability should also be included when it comes to making any decision for person with disabilities. So the activists at this time came up with the slogan that nothing for us without us. So they wanted that they should be included in the decision making process concerning the person with disabilities at this time. So after a few years, there are three major acts in America and UK, and in India it was the Person with Disability Act, which tried to work upon, or in which the major decisions were made so that the condition of person with disability can be made better.
Following this, in the year 2006, the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities came into existence, and this brought into the light a very unique approach, which was not accepted by then. And from this discussion, you must have understood that by now the person with disabilities were, their welfare and their upliftment was considered as the responsibility of the society to some extent, but a major focus was on that the person has to improve, has to be get trained, has to work hard so that they can be seen as equal as the other people. However, in this UNCRPD declaration, the responsibility was given to the society, and it was stated that even though the person's impairment is responsible for the disability to some extent, but it is the responsibility of the society to create such environment so that the person with disability, when interact with the environment, do not face additional difficulties and their condition cannot be deteriorated from there on. For example, you can see that it talked about three major changes in the environment that include the physical environment and the social environment as well as the legal environment. Coming to the physical environment, it was stated in the declaration that the public accessibility should be ensured and all the architectural barriers should be removed so that person with disabilities can get access to the areas like all other people. And as far as the aspect of the social environment is concerned, it basically dealt with the attitude of the people, and it was stated that the attitude of the people should be of the positive aspect, should be positive, so that it will help in making and formulating a constructive environment for person with disabilities. In the similar line, the legal environment was also stressed, and it was stated that the legal framework and the policy should be such so that the condition of the person with disability can actually enjoy the being part of the society, and there should not be any sort of restriction in the participation of the person due to the disability for being productive member of the society. Now coming to the models of the disability, I request Dr. Suryavanshi madam to kindly explain the points. थैंक यू डॉक्टर हेमलता चंद। अभी हेमलता मैडम ने आपको जो पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है डिसेबिलिटी को लेकर, वो क्रम के अनुसार कैसे कैसे बदला और क्या उसमें बदलाव आए वो बताया। अब हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पे। बेसिकली 3 मॉडल्स हैं, चैरिटी मॉडल, और दूसरा जो है हमारा मेडिकल मॉडल, और तीसरा सोशल मॉडल। और अगर हम बात करें इन मॉडल्स की, तो ये जो मॉडल्स हैं ये भी हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से उस टाइमलाइन के अनुसार धीरे धीरे समाज में आते गए, और तीनों जो पर्सपेक्टिव है विथ टाइम चेंजेस उसमें हमने देखे। तो जो डिसेबिलिटी का पर्सपेक्टिव है या धारणा है या अंडरस्टैंडिंग है, ये बड़ा डायनेमिक और इनोवेटिव है, जिसमें लगातार बदलाव आता गया और अभी भी वो बदलाव निरंतर चल रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैरिटी मॉडल से, या बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हम चैरिटी मॉडल की बात करें तो चैरिटी मॉडल में हम देखते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर सीन एज दोज इन नीड ऑफ हेल्प बिकॉज दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क on their own and need support for daily living activities। तो बेसिकली पहली ये धारणा है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, वो निर्भर हैं उन पर जिन्हें हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, या जो समाज के और लोग हैं जिन्हें हम नॉर्मल की कैटेगरी में रखते हैं, उनके मदद के बिना वो नहीं रह सकते और उनको उनके मदद की ज़रूरत है। दूसरा है कि व्यूज़ डिसेबिलिटी एज अ ट्रेजेडी और अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एज ट्रैजिक एंड पिटेबल। हमें चैरिटी मॉडल में दया और दान, ये दोनों भावनाएं दिखती हैं कि जो भी पर्सन है वो मे बी जो है उसकी जो कंडीशन है उस पर हम दया की भावना रखते हैं कि ऐसा हादसा ऐसा हो गया, या ये दुर्भाग्य की बात है कि उसको ये चीज़ मिली हुई है। तो जो समाज का हम कह सकते हैं व्यू है, पर्सपेक्टिव है पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर चैरिटी मॉडल में, वो ये दिखता है कि हमारा परसेप्शन उसको लेकर, उसको देखने का नज़रिया हमारा जो है वो सिंपैथेटिक है, कि हम दया की भावना से
देख रहे हैं, या हम जो है बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं सोसाइटी में। अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी देखें, कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेकर देखें, तो इस तरह के मिसकंसेप्शंस हमने भी सुने होंगे कि जैसे बुरे कर्मों का जो है ये फल है कि ऐसा इनके साथ हुआ, या ऐसा कभी कुछ किया होगा जिसके जो है हम कह सकते हैं फलस्वरूप ऐसा हुआ, और बीइंग हम जो नॉर्मल सोसाइटी है या और है तो हम उनके ऊपर दया कर रहे हैं या अच्छे डीड्स के फॉर्म में हम ये कर रहे हैं। तो जो चैरिटी मॉडल है उसमें हमने देखा लोग वेलफेयर के फॉर्म में कि जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए हमें दान करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो आगे आए और अलग अलग फॉर्म में उन्होंने जो है उन्हें हेल्प आउट करना शुरू किया। अब जो हम लिमिटेशंस देखते हैं चैरिटी मॉडल के वो बहुत सारे हैं, क्योंकि उस पर्सन को जब हम दया या नीड की भावना से देख रहे हैं तो हम उसके जो पोटेंशियल्स हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी कभी बात नहीं करते। हम बात करते हैं क्या कमियां उसके अंदर हैं या क्या चीज़ें वो नहीं कर सकता। तो ये सारे लिमिटेशंस हमें चैरिटी मॉडल में दिखते हैं, जहाँ पे जो पर्सन है वो डिपिक्टेड है, हम कह सकते हैं कोई ना कोई फ्लॉ में कोई कमी है उसके अंदर, और इट क्रिएट्स अ व्यू पॉइंट अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दैट इट इज़ अ ट्रेजेडी और पिटेबल कंडीशन फॉर देम। तो ये सारे लिमिटेशंस हमको चैरिटी मॉडल में देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा मॉडल है हम उस पर बात करते हैं, वो है मेडिकल मॉडल। अब मेडिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो मेडिकल मॉडल जो है वो बना था नॉर्मेटिव अप्रोच पे, नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये है हमारा नॉर्मेटिव अप्रोच है वो है क्या। जो वर्ड नॉर्मल आया है या हम नॉर्मल या एब नॉर्मल की कैटेगरी में किसी को डिवाइड करते हैं, तो नॉर्म्स का मतलब होता है मान्यताएं, या हमारी जो है ना किसी भी पर्टिकुलर एज को लेकर, उम्र को लेकर ये व्यक्ति ये चीज़ें कर सकता है, ये कार्य कर सकता है, उन्हें हम नॉर्म्स कहते हैं। अगर हम बच्चों के परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहें तो मान लीजिए 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, तो उस एज में, उस अवस्था में वो क्या क्या कर सकता है साइंटिफिकली, यानी मेडिकल टर्म्स में जब इसको हम स्टडी करते हैं, तो अगर 3 साल का बच्चा है तो अगर हम 1000 या 2000 सैंपल लेते हैं, 2000 बच्चों को हम जो हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, और हम फिर लिस्ट डाउन करते हैं कि एक 3 साल का बच्चा क्या क्या कार्य कर सकता है, जिसे हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के फॉर्म में आगे के जो हमारे यूनिट्स हैं उनमें पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, कि 3 साल का बच्चा वो चल सकता है, वो दौड़ सकता है, वो हॉप कर सकता है, उसकी वोकैबुलरी कितनी है, कितने शब्दों को उच्चारण वो कर सकता है। तो ये सारे कार्य अगर हम लिस्ट कर दें तो उसको हम डेवलपमेंटल हम विकासात्मक कार्य कहते हैं कि इस एज में बच्चा ये चीज़ कर पा रहा है। अब डिसेबिलिटी को हम समझते हैं या डेवलपमेंटल डिले को अगर हम समझें तो नॉर्मेटिव अप्रोच ये कहता है कि हमने ये निर्धारित कर दिया कि इस उम्र का बच्चा ये सारी चीज़ें कर लेता है। अब जो बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, यानी वो नॉर्मल नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो कुछ अलग है, वो डिफरेंट है। तो जो हमारा मेडिकल मॉडल है वो इसी पे बेस्ड है कि वो अंतर बताता है नॉर्मल में और जिसे हम एबनॉर्मल कह रहे हैं, या जो नॉर्मल बच्चा कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो इस डिफरेंस को हाईलाइट किया गया मेडिकल मॉडल में। तो बेसिकली हमारा जो मेडिकल मॉडल है वो ये बात करता है कि जो वो व्यक्ति है उसके अंदर कमियां क्या क्या हैं, और वो जो कमियां हैं वो काफ़ी हद तक फिजिकल फॉर्म में होती हैं, एनाटॉमिकल और साइकोलॉजिकल फॉर्म में होती हैं, यानी शरीर में क्या कमियां हैं, या मानसिक स्तर पे अगर हम देखें, कॉग्निटिव लेवल पर देखें तो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में क्या चीज़ें नहीं कर पा रहा है। तो इसको जब हम मेडिकल मॉडल को देखते हैं तो इसका जो हम कह सकते हैं पर्सपेक्टिव है वो हमें ये बताता है कि इस कमी को हम पूरा कैसे करें। तो बहुत सारी मेडिकल असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके द्वारा इस कमी को हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि मान लीजिए अगर कोई देख नहीं पा रहा है, उसको जो उसकी जो दृष्टि है वो लो विजन है, तो उसे हम स्पेक्टिकल्स या स्पेक्स प्रोवाइड कर देते हैं। कोई व्यक्ति है जो चल नहीं पा रहा है तो उसे हम व्हील चेयर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेडिकल मॉडल ये कहता है कि जो कमी है व्यक्ति के अंदर उसको हम मेडिकल उपकरणों द्वारा या मे बी कोई सर्जरी या मेडिकेशन के द्वारा उसकी पूर्ति कर दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। तो बेसिकली जो मेडिकल मॉडल है वो इसी पे फोकस था कि हम वो जो कमी है व्यक्ति के अंदर उसको कैसे उसकी पूर्ति करें। और हम समझते हैं कि लिमिटेशंस क्या है मेडिकल मॉडल्स के। अगर हम मेडिकल मॉडल के लिमिटेशंस की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो जो धारणा या
पर्सपेक्टिव थी वो सिर्फ उस पर्सन की समस्या को देखती है, हमारे समाज के रोल को उसको स्पेसिफाई नहीं करती, हमारे एनवायरनमेंट को जो है उसको कवर नहीं करती। मेडिकल मॉडल में 3 और शब्द आते हैं जो हमें अच्छे से समझने होंगे, दैट इज़ इम्पेयरमेंट और फिर डिसेबिलिटी एंड देन हैंडीकैप। तो अगर हम इम्पेयरमेंट की बात करें तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए जो आई है, अगर हम इस कोर्स की भी बात करें तो विजुअल इम्पेयरमेंट कोर्स है ये, तो जो उसका कॉर्निया है वो मान लीजिए ड्राई हो गया है, रिंकल्ड हो गया है, ख़राब हो गया है, तो आँख के स्ट्रक्चर में, एनाटॉमी में कोई समस्या आई, खराबी आई, तो इसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। ये शब्द इम्पेयरमेंट इसके लिए प्रयोग होता है। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी। जो कॉर्निया में हम कह सकते हैं रिंकल्स या ड्राइनेस आ गई, उसकी वजह से व्यक्ति देख नहीं पा रहा या बच्चा देख नहीं पा रहा, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। अब हम तीसरे शब्द पर आते हैं विच इज़ हैंडीकैप। अब मान लीजिए कोई क्लास है जिसमें जो क्लास टीचर है, सभी बच्चे आउटडोर गेम्स के लिए खेलने जा रहे हैं और हम उस बच्चे को इसलिए खेलने नहीं भेज रहे हैं क्योंकि वो किसी चीज़ से लड़ जाएगा, गिर जाएगा, या बच्चे जो खेल रहे हैं वो कैसे खेल पाएगा, तो हमने उसे बाहर जाने ही नहीं दिया, उसे खेलने ही नहीं दिया। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर हैंडीकैप, यू आर मेकिंग द पर्सन और द चाइल्ड हैंडीकैप, कि वो सोसाइटी में जो एक्टिविटीज़ हम जिन्हें नॉर्मल कह रहे हैं वो कर रहे हैं, पर वो व्यक्ति या वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज हैंडीकैप। तो ये तीनों टर्म्स हमें मेडिकल मॉडल से मिलते हैं। और बेसिक जो हमने लिमिटेशंस की बात की कि उसमें सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बिल्कुल भी बात नहीं की, उस पर्सपेक्टिव की बात नहीं की गई। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने कहा ये समय चक्र के साथ इन पर्सपेक्टिव्स में धीरे धीरे बदलाव आया। फिर जो थर्ड हमारा मॉडल है वो है सोशल एंड ह्यूमन अप्रोच मॉडल। सो अगर हम सोशल मॉडल की बात करें तो डिसेबिलिटी इज़ नॉट सिंपली अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बॉडी पार्ट और डिफ़िकल्टी इन फंक्शनिंग और इम्पेयरमेंट इन अ पर्सन, इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ द टोटल पिक्चर। तो जो शरीर का पार्ट नहीं है या एनाटॉमिकल डिफेक्ट है वो खाली एक पार्ट है उस पूरे पिक्चर की, पूरी पिक्चर नहीं है। डिसेबिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरैक्शन बिटवीन पर्सन्स एंड with impairment and the social and physical features of the environment। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो समाज, जो वातावरण है, उससे उस व्यक्ति का इंटरैक्शन कैसे हो रहा है। तो हमने भी बात की, जैसे व्हील चेयर हमने दे दिया, कोई व्यक्ति चल नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, तो हमने उसे व्हील चेयर प्रोवाइड कर ली। पर अगर हम अपने आसपास भी देखें, ध्यान दें, सर्वे दें, बहुत सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, रोड्स पर जाते हैं, बहुत सारी पब्लिक जो हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ जाते हैं। कितने ऐसे स्थान हैं जो हमें ऐसे मिलते हैं जहाँ पे एक व्हील चेयर पर्सन आसानी से जा सकता है, हम कह सकते हैं मूव कर सकता है। तो वो स्थान कितने हैं? तो वहाँ हमारा सोशल और जो है एनवायरनमेंट की बात आती है कि अगर उसको आप फ्रेंडली नहीं करते, उसको नहीं चेंज करते, तो व्यक्ति के अंदर चेंज लाकर भी या मेडिकल या हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी देकर भी अपने पर्पस में पूर्ण नहीं होते हैं और उसकी समस्या वहाँ ख़त्म नहीं होती है। तो इस मॉडल के साथ ये बात आई कि हम ये बात कहते हैं कि सोशल और एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हम मेडिकल मॉडल से सिर्फ उस कमी की पूर्ति करते हैं, पर जो सोशल एनवायरनमेंट मॉडल है उसमें जब हम बदलाव लाते हैं, उसको जब हम इंक्लूसिव करते हैं ताकि वो जो बच्चा है या वो व्यक्ति है पर्सन विद डिसेबिलिटी वो उसका प्रयोग कर पाए, वो उसको यूज़ कर पाए, तो फिर हम कहते हैं कि सोशल और जो हमारा ह्यूमन अप्रोच है वो वहाँ पर जो हम कह सकते हैं उसको हम देखते हैं कि वो क्रियान्वित होता है। तो ये रही बात हमारे सोशल और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव की। हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारा कोर्स भी 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन पर फोकस्ड है कि उनकी जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है कि उसे जब हमें एजुकेशन देना है और इंक्लूसिव स्कूल में देना है तो वो कैसा हो। तो उसके लिए सोशल और एनवायरमेंटल ह्यूमन अप्रोच जो मॉडल है वो बहुत ही हम कह सकते हैं उपयोगी है, इम्पॉर्टेंट है। खैर इस भी मॉडल की हम कुछ लिमिटेशंस देखते हैं, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस इस प्रकार है कि हम फिज़िकल एसेसिबिलिटी की तो बात करते हैं इस मॉडल में, सोशल मॉडल में, कि फ़िज़िकल एसेसिबिलिटी हो जाए, पर बहुत सारे इंटरवीनिंग या इंटरसेक्शनल फैक्टर्स भी होते हैं जिनको इस मॉडल में कंसिडर नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल जेंडर है, रेस है, कल्चर है। अब कोई महिला है यानी कोई लड़की है तो उसके साथ अगर हम देखें तो समस्या जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसको हम इंटरसेक्शन
इंटरैक्शनल इम्पैक्ट कहते हैं। तो बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, और बीइंग अ फीमेल भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये जब मिलकर आती हैं तो इसको एड्रेस हम नहीं देखते कि सोशल मॉडल जो है हमारा वो इसको एड्रेस कर पाता है। खैर, इन्हीं चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बदलाव अभी डॉक्टर हेमलता मैम ने भी आपको बताए कि आइसोलेशन से और चैरिटेबल पर्सपेक्टिव से धीरे धीरे हम इंटीग्रेटिंग मॉडल में आए कि हमें इंटीग्रेट करना है। पर अब हम बढ़ रहे हैं इंक्लूसिविटी की तरफ, कि हमें अलग स्पेशल स्कूल में रखकर सिर्फ नहीं पढ़ाना, बल्कि हमें शायद एक ऐसा स्कूल बनाना है, हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी या चाइल्ड विद डिसेबिलिटी इंक्लूसिव महसूस करे, वो उसका पार्ट महसूस करे। तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट और जो फिज़िकल हम कह सकते हैं जो फिज़िकल सोशल जो टोटल अप्रोच है एनवायरनमेंट का, वो भी हमें इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। उन्हें हम उसमें जो है हम कह सकते हैं इंक्लूसिविटी को बढ़ाते हुए हमें उन्हें इंडल्ज करना होगा। और इस कोर्स में हम आगे जो है डिटेल में डिफरेंट डिसेबिलिटी जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एक एक करके काफ़ी हम कह सकते हैं डेप्थ में पढ़ेंगे, ताकि हम सेंसिटाइज हो जाएं, हम अवेयर हो जाएं अबाउट ऑल द 21 डिसेबिलिटीज़ जो RPWD 2016 एक्ट के द्वारा हमें दी गई हैं। और आगे के हमारे कोर्सेज में इसी इंक्लूसिविटी की जो जर्नी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आई होप कि आज का जो सेशन था उसमें आपने जो डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और मॉडल्स हैं, उन्हें अच्छे से समझा और जाना होगा। धन्यवाद।